कोई क्वेश्चन रिपीटेड कर रहा है a very enthusiastic good afternoon to one and all. I feel honored and stand before you all and welcome all of you to this two-day CNE session theme on helping documents, which is organized by Diane. I feel honored to have Mrs. Sanju Solanki ma'am, the nursing superintendent of CSS at Hospital, and also our beloved principal ma'am, Dr. Geeta Parvata, supporting figure and inspiration to all of us. We also have among us Lieutenant Colonel Saroj Balaman. We welcome you all to this session. Life is a symbol of enlightenment. By lighting this symbolic lamp, let's remove darkness and enlighten among us wisdom and knowledge. I now invite all the dignitaries to light the lamp and symbolically inaugurate. I request the gathering final stand. I request everyone to stand for lighting. सब लोग खड़े हो जाएं। Thank you to all the dignitaries. Everyone can sit. I now invite our principal, Dr. Geeta Parvata, to kindly usual. जैसे जैसे कि हम लोगों ने सीएनई मिशन मैनेजमेंट से क्या नर्सिंग में नर्सिंग स्टाफ के लिए सीएनई हर महीने को आयोजित करेंगे
तो आज सीएनई का सेकंड सीरीज का शुरू हुआ है। लोग के साथ अनाउंस करना चाहूंगी आप लोगों का जो मोटिवेशन है और इस सीएनई के लिए हमें गवर्नमेंट से एक क्रेडिट आवर मिला है। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी में भी जो हमारा ये बैनर है क्रेडिट पॉइंट वन अवॉर्डेड बाय यूपी स्टेट बाय नर्सेस का। तो इस चीज की बहुत अगर 12 से 15 क्रेडिट आवर एक नर्सिंग की अधिकारी अपने पोस्ट में रहते हुए अर्जित करती है, उसको लेती है, तो वो उसकी इंक्रीमेंट, उसकी प्रमोशन के लिए हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि यही सीएमई की परिभाषा है, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन, सीएनई। तो आज हम इसके दूसरे चरण के हमें 2 दिवसीय की परमिशन मिली है वहां से, और आप लोग को जैसे बताया गया कि टॉपिक हमने लिया है नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, जो कि एनएबी के मॉड्यूल का सेक्शन 6 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नर्सिंग ऑफिसर को अपना क्योंकि आप पूरा दिन रात आपकी शिफ्ट में काम करते हैं, हमारा एविडेंस है, इसके द्वारा देखा जाता है हमारी डॉक्यूमेंटेशन स्किल राइटिंग से, और जो भी हमने पेशेंट के आउटकम में काम किया है, प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव, plan of action, third step, treatment given, and fourth step, what was the expected outcome. ये चारों चीजों को एक अलग परिभाषा में तोड़ा जाए, तो जो हमारी नर्सिंग केयर की जर्नी है, एक पेशेंट अगर वो मिनिमम रहा है, मैक्सिमम 7 डेज, वो जर्नी हमें इस 2 दिवस के सीएनई में तैयार कर लिया। इसलिए 1-2 एक्टिविटीज है कि आप लोग को ग्रुप एक्टिविटी दी जाएगी, और पूरा प्रयास ये भी हमारा पायलट प्रोजेक्ट है कि हमने जो भी टॉपिक्स रखे, जो भी रिसोर्स पर्सन बुलाए हैं, वो नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन की जो हम लोग हर हॉस्पिटल एनएपीएस हॉस्पिटल में जो डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, वही तरीका को अपनाए। हम कोई ऐसी चीज नहीं बताएंगे कि वो विदेशों में ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, आप उसको करने के लिए जिस पोर्टल में जाना पड़ेगा, नो, अकॉर्डिंग टू आवर हॉस्पिटल रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट। आज आप लोग आपकी क्लास में हमने कर्नल रत्ना विश्वास मैडम है, जो कि अमेरिका हॉस्पिटल में एसएलओ की पोस्ट पे काम कर रही है, सीनियर लर्निंग ऑफिसर। उन्होंने इससे पहले अपोलो में काम किया और नर्सिंग सर्विस में रही, तो उनका आपके द्वारा लेक्चर भेजी है, तो वो कुछ क्वेश्चन अगर ढूंढती है ऑनलाइन, तो आप लोग अपने आप को तैयार करें। ये कहना चाहूंगी, ये मत सोचना कि मेरे को ये सवाल आ रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ। यू आर ओपन, आप कोई भी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश में सवाल पूछ सकते हो, और प्लीज इस चीज को बांध के रखो कि नर्सिंग डॉक्यूमेंट हमारा ही काम है। कई बार हम कहते हैं नर्सिंग चेक दे देंगे, और आजकल बड़े हॉस्पिटल्स में नर्स इन्फॉर्म आ गई है, कई बार कंप्यूटर नर्स की यूज करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन को वैलिडेट करती है फ्री और वो मच ऑफ द वे हमें अपना काम कराना चाहिए। कौन जब भी कोई डॉक्यूमेंट को आप बोलो, प्लीज चेक कर लो कि ये डॉक्यूमेंट मैं भर रही हूँ वो इस केस से रिलेटेड है या नहीं। कई बार इनसे आउटपुट चार्ट चार्ट आ जाता है, और कई बार कंबाइंड चार्ट एक चार्ट से निकल जाता है, उसमें अब आजकल आप देखिए नर्स प्रैक्टिशनर के लिए हम लोग नर्सिंग
है कि अगर सीओपीडी के पेशेंट्स हैं तो उनकी ट्रीटमेंट की आप नर्सिंग केयर की क्या स्टेप्स लिखोगे, दैट इज क्लिनिकल पार्ट। तो ये छोटे छोटे टर्म्स आपको यूज किए जाएंगे, कोई फॉर्म कोशिश करेंगे पूरी कोई करनी है जो हमारे हॉस्पिटल में यूज होते हैं, आप उन्हीं से चर्चा करें, उन्हीं की हम एक्सरसाइज कराएं। बट अगर कभी कोई टर्म या कुछ चीज आपको लगी हो जिनके किताबों से मिल रही है, यदि तो आप क्वेश्चन एंड फॉलो अप। सेकंड थिंग, ये 2 दिन की सप्ताह के पीछे हमने नहीं रखी थी, और वो सर्टिफिकेट उनको मिलेगा कि हमें 70 और 90 अटेंड कर। मैं आपको आश्वासन के साथ कि हमारी ये छोटी सी कोशिश इस वर्ष में हमारे सारे नर्सिंग ऑफिसर को इसमें ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगी, और कोई ये नहीं कहेगा कि मेडिकल लीगल केस बना बिकॉज या कोर्ट केस कि हम लोग नर्सिंग ऑफिसर उस को बच गई। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ओके, Thank you. Using documentation is essential for clinical communication. Documentation provides an accurate reflection of nursing assessments, changes in clinical state, care provided, and pertinent patient information to support the multidisciplinary team to develop individualized care. Now we begin the session. I invite Mrs. Neha Tiwari, Associate Professor from the Department of Optics and Gynecology, Anna University. I will be speaking on various types of documentation forms. Again, I am starting my topic, various types of documentation format. Firstly, what is documentation? Gap. Documentation is the process of communicating in written form about essential facts for the maintenance of continuous history of events over a period of time. Recording and reporting are the other way of documentation. Can be hospital written medication हमारे डॉक्यूमेंट in that record is a key administrative legal document the nursing care given to individual family or community. The last one is report. Reports are process or written expression of information shared between the चाहे हम बोली बनाए चाहे हम रिटर्न रिपोर्ट, चाहे वो लैब की रिपोर्ट चाहे ऑफिस की रिपोर्ट, हम जो अपने तरफ से करिए और एप्लीकेशन भी हो जाते हैं उसको चीजें क्या होता है रिपोर्ट तो हम लोग खुद भी डाल के लैब में, ठीक है। हमारा डॉक्यूमेंटेशन हम हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट बोला तब नहीं मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन इजीली प्राप्त कर सेकेंड फॉर लीगल जो अब हो सकता है वो रिपोर्ट का हमारा कोई आगे यूज हो हमें अपने हिस्ट्री के लिए करना है। नेक्स्ट क्या है और उसके बाद और अवर recording record provide accurate and detailed account of meetings and various events को अगर हम शीट हमने मॉर्निंग शिफ्ट की इवनिंग शिफ्ट के नाइट कर रहे हैं तो हम सिचुएशन या चीजों को मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होता है मॉर्निंग स्टाफ को आफ्टरनून में कि हम पेशेंट को record provide accurate
and detailed account of mental health patient. Second one, it provides guide for follow-up of the course of disease and further care. क्या इसको डॉक्टर से जब पेशेंट आया है तो क्या करनी और अब जैसे डे टू डे टाइम because what purpose has diagnosis, treatment, and nursing care. Next, a record say the investigation of patient to get out treatment written order as legal value. And last one is say the patient know and doctor. What the second one is progress for the patient progress from day to day activity night one shift one morning one no there's no next students क्योंकि हमारे स्टूडेंट वहाँ भी होंगे उनके भी रिकॉर्ड मेंटेन करते रहेंगे नेक्स्ट स्टाफ next class academic and administrative next is patient monitoring and outpatient only क्योंकि patient record number patient by history पास में तो ये किसमें होता है तो हमारे पेशेंट आउट पेशेंट क्या होगा तो ऑलरेडी हमारे पेशेंट एडमिशन है तो उनके लिए क्या करते हैं हम क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एडमिशन ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट हमारे अनुसार आप हमारे बच्चों में सारे सारे ये चीज है इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड डाइट रिकॉर्ड एंड कोई भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें मोस्टली उसमें क्या क्या होता है हमारे क्या क्या सिद्धांत सबसे पहला क्या है ये शुड बी क्लियरली रिटन मतलब आपकी जो राइटिंग है वो क्या है वो पीछे वाले को सुनाई देगी मेरे पास बिना इसके तो भी हम लिख रहे हैं अपने रिकॉर्ड में या रिकॉर्ड में हम मेंटेन करते हैं वो शुड बी क्लियर इट शुड बी एक्यूरेट या तो वो भी हम एक्यूरेट तो आई हमें मैसेज के 10 AM में तो it should be there be मेन भाग उसके बाद हमारा बैग स्टेटस क्या हमारा ऑर्डर use standard abbreviation include all services and deep spaces between signed by March 20th each page having them a COVID number. Next is common cognition of सबसे पहला है नर्सिंग हिस्ट्री नर्सिंग हिस्ट्री में कहते हैं नर्सिंग हिस्ट्री क्या है जिसमें जो पेशेंट होगा हम नर्सिंग कहते हैं एडमिशन से लेके जितनी हिस्ट्री हमारे पास जनरल हिस्ट्री जो मेडिकल हिस्ट्री जितनी भी कंडीशन होगी उसको हम पूरा नर्सिंग हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं नर्सिंग हिस्ट्री ट्रेंड टाइम सेकंड है चीज है दो चीज
Next, no. We can use right condition problem from the achievement of जिसके अंदर क्या है also medication for personal job teaching for IO vital sign diabetes or neurological is computerized computerized is a healthcare system that directly knows in response to demand for clinical administrative and written material computer related patient का name address वो भी हमारे और रहना तो इसका क्या है client care to all standardized or second is facilitate fast communication इससे क्या होता है communication fast होता है इसी के तरीके से second is cost effective increase quality of communication disadvantage उसमें cost cost and second problem of line comprehension as an option recording क्या क्या करेंगे कोई भी हम रिक्वायरमेंट नहीं करते कोई भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया हो एक्यूरेट सेकंड कंप्लीट जो भी चीजें हम लिख रहे हैं उसका वीडियो इसमें दिखाई देगा टीओ है पेट्रोलॉजी ऑफ टीओ है this ये दोनों का क्या है तो इसमें यहाँ पर जहाँ पे दो शॉर्ट फॉर्म में है तो वहाँ पे पूरा नेक्स्ट करंट करंट टाइम compare चीजें मेडिटेशन के लिए जिस टाइम करके हमें वो क्या है टाइम हमें करेक्ट करना ठीक है ऑर्गेनाइज 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 मैनर या चार्ट बनाते हैं कोई भी उसने वो वेल ऑर्गेनाइज हिस्ट्री एंड और लास्ट में कॉन्फिडेंस रिपोर्टिंग This is the purpose of written communication. Need treatment of and response. Reporting क्या है कोई किसी भी term से it will be orally or it will be written. रिपोर्टिंग जो कि हम करते हैं हॉस्पिटल से और शिफ्ट होता है तो हम उसको भी रिपोर्ट करते हैं लास्ट में रिपोर्ट कोई और लास्ट में
Food is an essential for communication nurse and member of team. Provide communication to the nurse community by giving key information on the patient. It avoid duplication work complete health. Simple from here. Today, patient was received from emergency at 11 a.m. on the admission of patient first where temperature was patient was right 100 per minute and patient was having breathing problem and all the medicine are prescribed by the doctor. Okay, now आपने ये report anybody can say report में क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं जो बताएगा उसका नाम एक मिनट आप समझ में सवाल उसको क्या चीज हमारे से मिस सकती है खड़े होके बताओ आपने नंबर ऐड होगा बीपी नहीं बीपी नहीं ब्लड प्रेशर नहीं है ठीक है ओके चलो प्रेशर भी हमारा ही काम आना है गुड यस मैं सेकंड रिकॉर्डिंग क्या नहीं है एस वी ओ चलिए वो वो भी आज के टाइम देख रहे हैं जो कि इसमें आएगा तो एनीथिंग एल्स समझो ये समझो बताया यहाँ से दो पॉइंट ओके ये तो वो आया था तो उसका नॉट दैट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही आता है और तीसरे दिन पता चलता है तो इफ यू राइट द आउटपुट हिस्ट्री और तो हम ये हमारा पार्टिसिपेटरी सेशन ये जो O2 है जब हमने इससे पहले लाइन लिखी है is prescribed by the doctor to inhalation 3 to 4 liter 5 to 6 liter 6 to 7 liter ये चीज हमेशा क्या होता है अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो अकॉर्डिंग टू अपने उसमें डाला है is the update now that right दूसरा ये जानबूझ के हमने इसमें ऐड की अब हम चाहते हैं इसमें से अपनी हर स्लाइड में बताओ कि इसमें आज की अपडेट है तो अपने किसी ने एच एल टी एच एल टी के अपने हॉस्पिटल में यूज करते हैं हमारा हमारा सॉफ्टवेयर है उसे बोलते हैं हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस यूनिक आईडी से शुरू होता है वो करता है बट उसी डॉक्यूमेंटेशन में हमें कोई सामान मंगवाना होता है सॉफ्टवेयर का नाम क्या है सॉफ्टवेयर के इसका हिंदी भाषा में यही मतलब
इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कई बार आपको जब एसएमएस मैसेज आते हैं बैंक स्टोर में कैपिटल में एचएमटी के लिखा है तो वो हमारा सॉफ्टवेयर है सामान मंगा रहे हैं। तो ये चीजें आप यूज कर रहे हो इसलिए जो हम बात करेंगे वो नहीं हॉस्पिटल की करेंगे ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और मैडम को खांसी हो रही है आपको टॉपिक प्लीज उसे फिर ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें एरर के ऊपर ही है और एरर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हमेशा देना चाहती हूँ कि एक बार आपके सिस्टर को बोला गया और सिस्टर ने पेशेंट को बोला कि एक सॉन्ग के नीचे रखो 7 घंटे तक वो सॉन्ग दर्द सही नहीं हुआ क्योंकि वो दीवार के नीचे नहीं वो उसने बीच में डाल के नीचे उसने आ गया this is a very common example भाषा कि जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन टीचर को देने हैं उसको देख लो कई बार हाव भाव कई बार रिटर्न डॉक्यूमेंट और अगर नहीं है तो अच्छी रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग रख लो ताकि पेशेंट को हम बता दें कि आपने तुम्हें ये कहा इट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल बिकॉज ऑफ एडमिन यस यही हुआ कॉमर्स से लेना research intelligence my activity is focusing is today's topic is common करते हैं हॉस्पिटल में तो कुछ कुछ एरर हो जाते हैं तो क्या क्या कौन सा बताएगा क्या क्या एरर हो So between terms of harmony हाँ जी एंड करेंगे कौन सा बताएगा कि आप क्या क्या कॉजेज हैं क्या क्या एरर होगा क्योंकि कुछ गलतियां हम लोग करते हैं हमारी गलती की वजह से डॉक्यूमेंटेशन क्या हो जाता है मिस्टेक हो जाती है वही बता रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ हुआ है कोई बात नहीं आप नेक्स्ट स्लाइड को बता दीजिए सो मोस्ट कॉमन एरर क्या क्या हो जाते हैं हम लोग से हॉस्पिटल में जब हम लोग है हेल्थ सिस्टम में वर्क करते हैं हम लोग प्रिंटिंग टाइमिंग एंड साइनिंग है कभी कभी ऐसा हो जाता है हम लोग क्या जाते हैं टाइम लिखना भूल जाते हैं या फिर अपनी साइन करना वहां पर हो जाता है ये एरर है नेक्स्ट है राइटिंग स्लोली ठीक है राइटिंग स्लोली
कंटिन्यूएशन में इस तरह से जो कि दूसरे को क्या हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, क्लियरली वो समझ नहीं पा रहा है। ऑटोमेटिक कॉग्निटिव मेडिटेशन और ये कुछ मेडिटेशन ऐसे हैं क्योंकि क्या हम लोग को प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन हो सकता है नॉट डूइंग की वजह से हमको मेडिटेशन नहीं दे पाते हैं, तो हम इसके ऊपर एनालिसिस नहीं करते हैं, तो ये एरर में आ जाता है। नेक्स्ट है रीडिंग फ्लैग्स ऑन फॉर्म्स। फॉर्म्स ऐसे होते हैं कि कुछ कॉलम हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, होता है ऐसा। ओके, नेक्स्ट एंट्री, कुछ एंट्री क्या हो जाती है कि हम लोग मतलब लेट करते हैं, मान लो हमें कि नंबर मेडिटेशन देना है, इसका एंट्री क्या नंबर कर रहे हैं या क्या नंबर कर रहे हैं, और उसका टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे फाइनल उसका टाइम भी निकल जाएगा है, हमारी एंट्री वो रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटिंग सब्जेक्टिव डेटा। डॉक्यूमेंटिंग सब्जेक्टिव डेटा कई बार ये है, हम इधर लिख देते हैं कि बेड पूरा गीला है, दैट पॉइंट सब्जेक्टिव जो हमें दिमाग में आ रहा है, वो पेशेंट बहुत खराब है, क्या मतलब जो चीज हमें हमें फील हुई हमने कोई डॉक्यूमेंट में लिख दी, वो पेशेंट बहुत बदतमीज है, ये रूड है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो पेशेंट की दिमागी हालत कैसी है, या फैमिली मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, हम सीधा डॉक्यूमेंट में ले लेते हैं, अरे बिना स्टाफ अगर फैमिली मेंबर इनकॉपरेटिव है तो अलग से हैंडल करो, उसे आप सब्जेक्ट कई बार में आता है कि ये वो सारे लोग इतने रूड थे कि हमको ये रिपोर्ट ही नहीं करना, that we have to avoid it। और दूसरी मैडम ने पॉइंट बताया है कि सारे पॉइंट जब हम कंप्यूटराइज में आ जाते हैं ना, तो जब कंप्यूटर डाटा मेंटेन करता है कोई भी सॉफ्टवेयर में, ये सारे पॉइंट्स अपने आप हट जाते हैं, आप कोई भी पॉइंट छोड़ देते हो क्या वो सबमिट हो लास्ट में, वो सबमिट नहीं हो पाना, पता है कि ये एवरी है, तो कोई फायदा हो गया कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाने का। और कोई भी चीज ब्लैंक कह देगा कि आपने स्पेस ली है, तीसरा पॉइंट जब आप लेट एंट्री कर ही नहीं सकते, एक चीज का टाइम होता है फोकस में भरना की रिपोर्ट क्या है, उसके बाद वो लिंक भी समाप्त पॉइंट, तो ये जितने भी कॉमन एरर है कैसे हो सकते हैं जब हम अपने रिपोर्ट्स को कंप्यूटर में शिफ्ट करें, ये सारे पॉइंट even pronoun also grammary में आप पढ़ ले। Next one is unique activity one. I will discuss in detail. And information next commonly confusing words and error in pronouns. Okay. हम लोग इसमें discuss करेंगे not timing and signing entries. Every single entry has a date, proper date, proper time, तो प्रॉपर उसमें डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, एंड नेम ऑफ द पर्सन कलर से प्रॉपर रिकॉर्ड, तो हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बिल करते हैं, चाहे हम उसमें कर रहे हैं, चाहे हम पेपर इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली किया जाए, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, यू मस्ट एवरी टाइम, अगर हम कर रहे हैं तो हमें एवरी टाइम करते रहना चाहिए, एंड पेपर पर दैट इंडिकेट जो इंडिकेट कर रहे हो लिखा है कि यहाँ पे डेट करना है, यहाँ पे टाइम करना है, तो आपको फिल करना चाहिए, एंड यू मस्ट इनिशियल फुल लास्ट नेम भी लिखना है, नाम अपने पूजा पूजा तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको लास्ट नेम में फुल नेम कंप्लीटली करना चाहिए,
जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो होना चाहिए। When you are documentation from one place to next place, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी सारी एक्टिविटी सारा है, इसलिए एंट्री में वहाँ आपको सभी जगह ये करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं में आ जाए। कभी कभी हम क्या करते हैं राइटिंग स्ट्रॉबेरी पर मेरे एक्सप्लेनेशन स्लोली राइटिंग एंड रीजनिंग confusion and communication problem that address at all for patient later time. हो सकता है कि हम लोग क्या कभी कभी स्लोली राइटिंग दूसरा जो वायरशीट उसको कुछ और मीनिंग समझ आए और कुछ और documentation error. Next is not understanding medication or treatment. What is medication? Medication and treatment should happen before facility is not. पहले ये बताइए कि what is medication? कौन बताएगा? medication जो prescribe नहीं है हमारी और हम क्या किसी वजह से उनको आए हैं या फिर अभी नहीं दे पाए हैं नहीं दे पाए या हम स्कूल नहीं तो उसकी फिर क्या हो जाता है वो भी दैट इज आल्सो अंडर द एरर ठीक है उसकी एंट्री का नहीं होता है आपने वो एप्लीकेशन मिस कर रजिस्टर माइनस पर आप क्या नहीं करते वो एप्लीकेशन नहीं हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन भी नॉट डॉक्यूमेंटेशन ये किसी के वजह से हो सकता है पिछली मैरिज में वैसे भी शॉर्ट था की वजह से हो सकता है टाइमिंग की वजह से हो सकता है और छुट्टी की वजह से हो सकता है काफी अगर आपने मान तो आपने उसके आपने क्लियर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है ना तो फॉर्म हमने कितनी बार होती है फॉर्म नहीं शो कर रही उसका डॉक्यूमेंट नहीं उस फॉर्म को छोड़ दिया ऐसा कॉलम है कॉलम है तो उसको आ जाएगा एरर में आ जाएगा और ये लिए आपके लिए भी ठीक है नेक्स्ट एडिंग लेट एंट्रीज इसके एंट्री भूल जाते हैं लेट एंट्रीज जैसे कि वाइटल्स होती और मेडिटेशन और सारी चीजें होती है हम क्या करते हैं हमने उसकी एंट्री क्या करते हैं लेट कर देते हैं लेट करने के चक्कर में हो सकता है कि हम दिमाग से हमारा निकल जाएगा हम भूल जाएंगे और वो एंट्री हमारी ऊपर छूट जाएगी ठीक है एंड फोन नंबर कभी और इन्फॉर्मेशन
एनसी की वजह से वो क्या हो जाएगा एनसी छूट जाएगा और लेट हो जाएगी या मैं या तो उसकी एनसी क्या करती लेट करती लेट करती जी है और मुझे तो ये क्या शो कर रहा है और डॉक्यूमेंटेशन में कि आपने वैलिडेशन दिया ही है अगर आपने नहीं किया था और आपने दीदी क्या एनसी नहीं की तो आपने डॉक्यूमेंट क्या शो कर रहा है आपने दीदी ठीक है सो इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी अगर आपको जब एंट्री करना है तब आपको इमीडिएटली एंट्री करना चाहिए और उसके बाद ही उसको काम करना चाहिए चाहे क्लियरली स्टेट द डेट एंड टाइम ऑफ एंट्री अगर कभी हो जाता है कि आपने एप्लीकेशन दिया है कि लेट है तो आप उसके प्रॉपर टाइम एंड डेट लिखकर ले सकते हो जैसे आपको कोई एंटीबायोटिक देना है 10 एम पर ठीक है आपने 11 एम पर दिया है तो आपको उसका 10 एम नहीं लिखना है आपको 11 एम लिखना चाहिए ताकि जो नेक्स्ट डोज मिलता है टाइम के अकॉर्डिंगली काउंट करके वो नेक्स्ट ठीक है okay next is documented subject का documented subject related फैमिली का एक्सप्लेन करो कोई भी चीज हम डायरेक्टली नहीं करते हैं डायरेक्टली नहीं लिखेंगे राइट इसी टर्म्स में डिमांड नहीं है मांगी है कोई चीज डिमांड नहीं तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि डिमांड पेशेंट इज डिमांडिंग दिस पेशेंट इज डिमांडिंग फूड क्या डायरेक्टली वर्ड हमें इस तरह से सब्जेक्ट वर्ड का यूज नहीं करना है irritating using application avoid using application that can be misinterpreted and result in confusion and error अगर आप कोई भी करते हैं गलत लिखते हैं तो उससे क्या हो सकता है कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है एंड कुछ एरर जैसे कि कुछ मेडिटेशन होती है आपकी तो लाइक साउंड लाइक मेडिटेशन होती है लाइक नहीं देते तो हमने उसका नेम भी क्या लिख दिया गलत लिख दिया तो एप्लीकेशन की वजह से क्या हुआ गलत हो गया और फिर गलत मेडिटेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी गलत सॉरी ध्यान रखना चाहिए symptoms or conditions you should document any new condition their active date, including the time of occurrence, the action to and the patient response. मीन्स हमें जो कुछ अगर नए सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट में कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये नया सिम्टम्स है जैसे कि टाइम ऑफ ऑक्सीजन वो कब हुआ है किस टाइम पर हुआ है एक्शन एंड पेशेंट क्या होगा identify the new application card जैसे कि cards हो गया pressure marks हो गया force हो गया box हो गया ठीक है elevated temperature seizure pressure ulcer ठीक है बहुत सारी चीजें हमें कभी कभी हम न्यू सिम्टम्स को डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हैं मान लीजिए किसी पेशेंट को pressure हो रहा है ना pressure पेशेंट को हो रहा है डॉक्यूमेंट नहीं करते ठीक है फिर अगर पेशेंट का टाइम आ रहा है ना चाहिए पेशेंट की बात नहीं जा रहा है दैट शुड आल्सो उसको भी हमें एंट्री करना है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमें एंट्री करके कभी डॉक्टर का फाइल देंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाउ आया है ये तो वाइटल साइंस में आया है पार्टनर की और आगे छोड़ते हैं और आगे बाद में देखा रीडिंग में मेरी चेंजेस होते हैं उनको हमें करना चाहिए क्योंकि कभी कभी होगा ठीक है नहीं दे देगा ठीक है तो लाइट ड्यूटी सिस्टम का रेट से निकले
लाइट, तो अगले दिन की ट्रीटमेंट बहुत मुझे कि वो आपके फॉर्मेट में स्लीपिंग नहीं आता है, तो मगर आप अपनी आदत बना लें कि मैं मैक्रोटी लेती और मैंने हर पेशेंट की रिपोर्ट में पॉइंट, क्योंकि वो आपको यूजली शायद फॉर्मेट में भी नहीं दिया है स्लीपिंग या स्लेप्ट वाला, बट दैट यू हैव टू राइट। ज्यादातर अगले दिन जो पेशेंट सोया नहीं सिस्टम को बच्चा हैंडिंग ओवर में का कोई वर्गीकरण है ही नहीं। कैसे पता होगा कैसे बात डॉक्टर्स को जाने समझ में आ गई। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट आपके ये कुछ चीजें जो आपको देने अच्छा आप टाइम दिन सो गए थे बट वो आपने अंडरस्टैंड कर डॉक्यूमेंट नहीं करते तो वो क्या हो जाता है वो दूसरे को समझ में नहीं आता है। दूसरा जो होगा दूसरा स्टाफ है या डॉक्टर आएंगे तो उनको वो चीज क्लियर नहीं होगी। अगर आप हर एक चीज को क्लियरली मेंशन करते जो भी चीज हमें फील हो रही है जो भी चीज हम देख रहे हैं अक्सर ये रहता है कि हमारे माइंड से आंसर हो सकता है और उसी टाइम पे अगर आप उसको कर देंगे तो आइडिया हो जाती है तो दूसरा काम तो और भी अगर आप लोगों ने और पेशेंट देखे हो तो जब वो कोमा में जाते हैं कई बार पुराने डॉक्टर चार्ट राइटिंग चार्ट का मतलब होता था तो उसको बोलते थे आपके साइन पर वो केवल उसका ये कहने के लिए कि आप इसका सीरम या रिएक्टिव लेवल बढ़ रहा है या सीरम बिलोरुबिन बढ़ रहा है तो वो अगर स्टेज में जा रहा है या को बांध लो अपने साथ कि जब आप एक क्लीनर पेशेंट का पेशेंट अटेंड कर रहे हो और आज उसका प्रमुख उसका ब्लड की आपको 120 हुआ है प्लस उनकी ब्लड के बाद आप एक सिग्नेचर अगले दिन मैंने वार्ड सिस्टम भी उससे साइन करना वो केवल हमारे लिए है कि पेशेंट बेहतर हो रही है या नहीं सेम इसी केस में टीका लगेगा टीचर एडिटर तो हम ही तो मरीज को रोज देख रहे हैं डॉक्टर को बदल जाते हैं या इनको भूल भी जाते हैं कि घर को कहीं बाहर देगा मैं अपनी सब टीचर एडिटर में अब आराम लग रहा है वो चीजें फिर अगर मैं ऑफिशियली रिपोर्ट में डालूंगी तो कोई कॉलम में वो आपके लिए जब आप कॉलर होल्डर हमारे लिए नए है तो अब अपने को बोर्ड आया से अलग कैसे अलग कैसे यही हमारी हैंडिंग ओवर की यही हमारी राइटिंग की कॉम्पिटेंसी है तो बहुत आप कोई अच्छा नॉर्मल नहीं है तो ये काम बढ़े हम ये भी पड़ेगा अब ये भी खूब नहीं है कुछ समय बाद मैं आपको एक चार्ट भी हम लोग बताऊंगी कि अभी वो ये चार्ट में एक सिस्टर एक मरीज का पीपीआर ब्लड प्रेशर और एसपीओ2 कितना मिनट लेती है अपने आर्टिकल जोड़ने में वाइटल पैरामीटर देने में वाइटल साइंस को डॉक्यूमेंट करने में और उसके बाद उसको पूरा लिखने में एक दो मिनट के तो वाइटल साइन लेनी है एक मिनट की पल्स लेनी है रेस्पिरेशन भी एक मिनट का लेना 3 मिनट तो उसमें निकल जाते हैं और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करें क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में ये चर्चा हो रही है कि सिस्टर करती फार्मासिस्ट दवाई दे देता है वार्ड आया और क्लास 4 के लोग आके बिस्तर बना देते हैं हाइजीन दे देते हैं तो सिस्टर करती क्या है कौन सी केयर क्या केयर जब खाना किसी ने दे दिया दवा फार्मासिस्ट आके दे रहे हैं जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने लगे तो डॉक्यूमेंट दे रही है सिस्टर करती क्या है He's trying to understand you have to prove that
जितने कम मेडिटेशन एरर होंगे, जितने कम डॉक्यूमेंटेशन एरर होंगे, वही हमारे काम को बताएगी कि सिस्टम क्या है। Now you got my point? और इसके ऊपर अगली लेवल से काम कर रहे हैं और आपको पता है कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल में रोबोट आ रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, तो अब रोबोट नर्स आ रही है, जो कि ऑलरेडी इंडिया में है, चेन्नई में रोबोट वो काफी काम अपने आप ही कर रहे हैं। डॉक्टर जी, ऐसा ना हो कि नर्सिंग गायब ही हो जाए अगर हम अपने आप को कॉन्फिडेंस वेरी ट्रू बात just click now. Please be quiet. Information is the wrong chart गलत चार्ट में पेशेंट की इंफॉर्मेशन एंट्री कर देते हैं दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डॉक्यूमेंट एरर दिस एरर कैन हैपन इजीली स्पेशली विद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड and it is the problem occur when a nurse is not in the ये मानो हमने किसी पैर नंबर पर जो हमने इसका है रॉन्ग चार्ट गलत चार्ट का एंट्री कर देखो दूसरे लोग क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए don't take shortcut in electronic record system shortcut आपको नहीं करना जैसे कि मैं आपने बताया था short form का मतलब बहुत सारे वो करते हैं including copying and pasting medical record medical record का कोई copy paste नहीं करना चाहिए which can lead to carry over wrong inaccurate or outdated information भी तो कर सकते तो क्या करना चाहिए मेक श्योर यू आर और करेक्ट रिकॉर्ड नहीं एंट्री कर देना है तो मैं ये रिकॉर्ड निकाल कर सकती आप अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कर रहे हैं या इसलिए स्टार्ट on the screen in front of on you are the application का नाम डेट चाहिए नंबर पहले ही देखने से पहले और दो डिले डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि बताया था एक टाइम वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को डिले करना चाहिए इट इज टू इजी टू फॉरगेट डिले कभी हो जाता है या डिले करने के दिमाग से हमारे बदल जाता है और भी हम भूल जाते हैं इफ डिले पैनिक लुक एट ओके अंदर आपसे ये action to be your bad that is recorded अगर हमने कंडीशन दे पा रहे हैं 10 मिनट लेट हो गए हैं 8 घंटा लेट हो गया तो वो आधा घंटा क्या होना चाहिए ऑटोमेटिकली होना चाहिए ओके तो डेली मैंने एक घंटा लिए तो एक घंटे टाइम क्या मेंशन कैन बी तो वो डॉक्यूमेंट एडमिशन एग्रीमेंट या ऐसा भी होना चाहिए मैंने रिकॉर्ड कंप्लीट पहले करके काम तो हो गया मेरा बस मुझे काम करना है पूरा कवर करके साथ साथ करना चाहिए यूज करके ऑन और एनिमल यहाँ पर टूल है possible these have picture of this other scorecard है question है सारी चीजें आपको प्रॉपर क्या करना चाहिए ना कोई अपना शेयर करना चाहता है डॉक्यूमेंटेशन एरर में and
लैपटॉप Thank you. High quality clinical documentation is a prerequisite for high quality patient care. Computer-based documentation system have the potential to reduce the time and effort needed for documentation. So now we have an online session. We have Lieutenant Colonel and Ma'am. She is having 33 years of clinical experience and she is having 15 publications. She is currently working in Amrita Institute of Medical Sciences, Faridabad, as an SNO, and she is also pursuing PhD in OBG nursing. So we'll move on to the session. evening, everyone. Am I audible?
Can you hear me? Yes, Okay. Good evening to all of you. And I think you have done your pre test and you are aware of what we are going to discuss today, right? Okay, Ambali, you can show the slides. yes. So, all of you are aware of the importance of computer in hospital documentation nowadays. All of you already have a mobile phone with you and you really understand how important it is in your life. So, similarly, computer and hospital documentation is very, very important nowadays. Any hospital, whether it is government, private, or anywhere, because these days very few people carry any of the hard old papers which they have taken treatment before, and nowadays it is all either cd pen drive or in the mobile that they are carrying the details of the health which has happened in the past. And we as nurses, you understand that whenever we are meeting a patient or discussing with the patient, we always go with the present history and past history, which is very, very important to us. So, having an authentic document that is very clear as to give us the history of the illness of the past and present plays a vital role in our nursing care plan. So, how it is important to have the hospital documentation on a computer? There are many softwares which are available nowadays, and we have to be aware of the basic requirements that are required to manage and work in a healthcare setup in a given hospital. So, the basic objectives of this session is, can you change the slide for me? To understand nursing informatives, or you can say that it is nursing informatives, that is computer based technology. You should understand the effects on the nursing staff, understanding why it is important for us in nursing, learn new strategy and integrate all the information and technology in our day to day work that will help us not only to take care of the patient and also to maintain the documents that are necessary for our patients. Next. Can you give me the option to share? So, basically, the meaning of information technology, or it is an automated document that will save the information that is used to study in the system sooner or later.
So healthcare informatics is very, very important in nowadays healthcare system, because there is a collaboration between science and engineering adapted to develop technology in producing the study of the patient data, which will be required for the present and also in the future. Like whatever the diagnostic tests which are there, whatever the medical scans that are available, which will be available in the system. Next. So basically, these are having a combination of three things. That is the nursing science. We as nurse, what we are doing and learning as a skillful person. Also, the information science, which we are collecting and uploading, and also the computer science, which will help us to retrieve the data whenever it is required. Next. So there are number of definitions which are there. Basically, you must understand that computer technology is being helped to support in the clinical practice and administration as well as education. Like whatever WhatsApp group you all are having, how you are sharing your duty rosters, or any other documents which is related to your work concern, all comes under this main heading. Next. So, goal of nursing informatics, or what is the importance of it, is that is to optimize. Like in olden days, people used to write and maybe the paper gets withered or the ink is not proper, it gets smudged. All that is taken care of in informatics, and it is not only helpful and useful in the hospital setup, it is also helpful and useful in the family as well as the community. This is basically to improve and give a good health care coverage to the population of the community and family. So this is just proving or providing a way to give a provision of care for all the community as well as in the hospital. Next. So the goal of nursing informatics, like what you should know is the information is right. The information will be right only if you are uploading the correct information. So when we are doing at the back end, it is important for us to feed the correct information, and the information has to be shared to the right person or right people, the concerned people. It should not be shared to everyone. Okay, and it should be appropriate with the time, and whatever job one is supposed to do, only to those people it is shared, and it should be within the right cost. For example, like if you are uploading any lab values, it should be in line with whatever values you have given to the correct doctor. So our information has to be very authentic and clear channel of communication. Next. So our hospital management, you all are having a different system. These are different technology, different softwares which are used in different hospitals. So there will be a little change here and there in the type of application. Ultimately, it is all the same, because it is a technology which is common, and some software with whatever change accordingly. Next. So what are the is like, generally the common features that are used are the patient dashboards, where you can log in and see the diagnostic test, the radiological test, the pharmacy services, that is what medication is written, what you are getting for the patient, in case you need a blood
required for transfusion, all these will be there, which will be appropriate with the date and time and your requirement, which will be able to see even in the later when it is required and it can be retrieved. Next. So, electronic medical documents or records play a very, very important nowadays, because nowhere without technology we are able to function effectively. So doctors have their own information system, auto prescription, especially for those patients who are on a regular treatment, like we know the chronic diseases like diabetes or hypertension, where there is not much change in the treatment. Auto prescription are generally used. Dedicated software depending on the type of specialty required based on obstetrics, gynecology, neonatology, anesthesia, or infertility, etc. So this will be depending upon who is required, what software will be given to them so that they can have a standard protocol of their treatment and management, which this concern for the patients. Next. So, application of nursing informatics in practice is, first, we should know how to assess the data. We should know where to go and how to assess the data. Enter, enter whatever the relevant documentation which we are doing. So, in documentation also, we have some hard copies, some soft copies. So, entry of the data is part of our job, and we must make sure that is very authentic and it should be correct. And this software also enables us to retrieve the data whenever it is required. Simple example of using a bedside monitor for any patients, where you can see the trend, where you can see the vital signs of the patient presently and also past 1 hour or 2 hours, or if there is some problem with the patient, then we can also go back and see what was the trend or what was the pattern of the vital signs at that particular time when the patient had a problem. Then using of computer application, it is basically plan generating nursing care plans. You can have a drop down list, like if you want to measure the urine output of a particular patient, then you have a drop down list of 100 ml, 200 ml, 150 ml. Maybe manually you can enter whatever the details is. So these all application makes a life a little more comfortable. But yes, you have to learn exactly what software is available to you and how you are going to use this application for your work. Then again, using of computer application to enter the demographic data like height, weight, etc. is also there. Use of information management system for the client's education. You want to give a standard health education or standard protocol for any patient, maybe diet for a cardiology patient, or your intake of fluids, or what are the components for a renal patients. All this can be standardized as per the height and weight, so that even the patient can retrieve and learn from whatever is being there stored in the application. Next. So, using technology based monitoring system, operating peripheral devices, bedsides at hand, and automatic billing, which is very, very common whenever any patient is getting admitted. Then, with that, we are whatever consumable are used or whatever medications are used, it automatically goes into the account, and we are able to give a total sum of amount which is done end of the day or end of the period when the patient is discharged, or also update the patient time to time how much money has been spent on a particular patient. So this will help the patient also to know like how much money he has to plan or what care he has to be taken. Next. Participants in the design and developing of new application nursing practice. See, our
work is something different. We have our different methods of working. So these softwares are generally developed by engineers, so they will have lot of technical knowledge, but your inputs, like how you want it to be, you have to specify them. Like if you want to say that if a patient is a known case of hypertension, maybe the normal bp may be 120 to 80, but when you are setting the maximum and minimum limit for any patient, when you are setting the bp for the patient, if they don't give you the maximum and the minimum level, a hypertensive patient whose bp normally remains say about 150 by 90, there will be a continuous alarm. So the trend setting or the setting of the computer has to be set and utilized by the engineer, who will set the computer limits as per your requirement. Unless and until you give your inputs, then these will be just mechanical tools that will not be functional and operational. Next. Are you all able to follow me my English, or should I speak in Hindi? You able to follow me? Okay. In administration, especially your duty rostering, okay, your indenting of the stock, and whatever the policies, SOPs, the procedure manuals, all this comes as a LAN, local area networking, which is there, which may be required for you to refer on and off. So this is also very important. Like we get a group mail of all the activities, like today CNE was planned, you got a mail. So all this is more effective in computers in nursing administration. Next. Next slide, please. So, since we can do multiple things on a same platform, we are not having that much of hard documents where it is difficult to store the hard copies and document and saving that document. So, we are doing multiple tasks on a single computer. So, this is more cost effective, and also it is safety, and the quality is safety in the sense only those people who have the password can open and check and see whatever it is required. Quality means, again, when you are entering something, these are all printed typed words, so there is no misunderstanding of the language, or you are not able to understand, because handwriting sometimes you are able to understand or not. So quality is also maintained, and as I told you, the trend, the pattern, we can see the past and also we can see the present, which will help us in the diagnosis and the treatment of the patient. Next. These are some examples where booking of appointments are taken in the OPD basis. Like you can see that you can verify with the mobile number, select which hospital they want to choose. You can just check the availability of the concerned doctor, then select the date of appointment, whichever is comfortable for you to go and see, and also Aadhaar verification, which is common because nowadays people are using Aishman card, etc., and also get confirmation when you have to visit with the date and time. This is a very simple manual technology which is used in computers for booking all the appointments, which is done almost in all the hospitals nowadays. Even in the MCD hospitals or in the government hospitals also, they are booking an appointment so that you unnecessarily don't go and wait and waste your time. Next.
Then in nursing education, like this is an example, you are sitting there, I am sitting here, we are able to connect with each other. Similarly, like I have shared the PPT few days back, now we are able to see. So in nursing education also, there are multiple applications, presentation of software, computer labs resources, computer assisted instructions, then teleconferencing, what we are doing now, stimulation labs, which you have in your college. All this is the application of nursing informatics, which is used in nursing education. Next. So again, online registration where you get the confirmation, also paying whatever the money which is required, we are sharing on the GPay or the Google Pay. All this is based on computer technology only. Also video conferencing, teleconferencing, which multiple people can be got together on the same platform to do whatever is needed, is all helpful in nursing informatics. Next. There are multiple apps which are available, which are there. Like I'm just randomly explaining, like we have the pediatric stat, that is pedistat, where we are managing the pediatric issues. So this app generally gives a quick professional quick access, that is weight based medication dosage, which we manually calculate, that will give you quick, so that you can start the treatment fast. Medical management in case of anaphylaxis, it's not that the patient will develop anaphylaxis then you will check, but these are available for you to learn, so that you are able to learn quickly in a standardized format and make them useful in your day to day practice. Okay, next slide. So this is again quick cal. These are the some of the applications which are freely available. The growth charts, the bilirubin rebel, what is the criteria, body mass index, blood pressure percentile, weight and length, age charts. These are all related to pediatrics. Next. You have the Hippocrates, which will give you some medical news, management guidance, evidence based clinical practice guidelines, disease diagnosis and management, continuing education, credit cards, etc. These are also which is available, that we are using it on a day-to-day basis, which are easily available. During the COVID-19 scenario, there were many resources, guidelines from the government, what we are supposed to do. All this we had got it online, which was useful for us to follow a standardized protocol for all of us. Okay, next. Up to date, this is also another app. Over uh, 30 research studies, it has, this is a little old slide, but you will get up to date information, what is there required. Nurses can easily search the bookmark information. They can also print and email graphics and topics to the patient to aid in the education. Okay, next. Trello is like you have multiple people working on the same project. Like you have the doctor, you have the nurse, you have the technician, you have the lab people, everyone taking care of one patient. So, whatever is their findings, they will update in a common platform, and everyone can see. The doctor can see the investigation plus the nursing care which has been given to that patient. Everything will be on the same platform where they can look, retrieve and plan for the care. So similarly, the schedule exam for NCLEX, everything is done in this similar manner. Next.
Mediscape Online is also one-stop medical resource for medical news, education, and clinical references. Nurses can also assess all this and more, and it is very user-friendly, where you will get the current news affecting nurses, access to the drugs and disease database, continuing education for nurses, clinical trial updates, and online local events and webinar, which if you are interested can go through. Next. Again, in research also, problem identification and literature review are also available there, where if anyone is interested any clinical based research, they can go retrieve and see what is more interesting for them and which is related to their work field and work on it. Next. Also, data collection and analysis, creating different types of data form, calculating the descriptive and analytic statistics, then research dissemination, grants, locate, and download of submitting funding application. All these are available, like, national level also, international level also. We have many researches and many funds which are generated. If you are interested, it will be of use to you. Next. In community, as all of you know, we have the Ministry of Health and Family Welfare, Mother and Child Tracking System. We have the National Organ Donation Noto. Then the e-hospital, where different hospitals, what are the treatment, what are the specialties available. DigiLock is a common application that most of you must be having on your mobile, where you will be having your 10 certificate, 12 certificate, your Aadhaar card, your driving license, etc. All these applications which are useful for the community. Next. So the role is user license, involve installation, what type of informatics you are having. The project manager will help in planning and implementing whatever is required as per the organization and the individual need. Educators and also everyone should know how to use this application and also develop how to manage the material, what can be put inside so that it will be useful for a common purpose. Next. Basically, in health management information system, we have everything like the laboratory, the billing, the electronic medical record, where we are monitoring the trends of the cardiac, then appointment scheduling, I already told you, registration of patient, OPD, IPD management, mediclaim in case they are having some claim from like Aishman Bharat or any insurance company, patient help desk whenever they need what specialty concern, then consultant management, radiology. These are the most common health management information that are available in the basic hospital, also in any of the government and private organization. Next. So, types of the hospital management information is based on the e-health initiative in India, which the government has made it mandatory, like, linking the Aadhaar card with the patient, making Aishman essential for the poor people, drug and logistic information and management system. It is also a system that handle procurement, storage, the surgical goods distribution, whatever you are getting from the pharmacy, etc. All will come in this. Next. Admission, discharge, transfer, that is available in the system. You know which bed is empty, which bed you can shift a patient from ER or intra departmental transfer. All this will be available at the click of a mouse, where you can see, check before shifting any patient. Then other ancillary system is used for therapies such as physical, radiology, laboratory, that shares the information with the other system. Next.
pregnancy and child tracking and health services. Generally, these are used by the ASHA workers, where at the remote level they are monitoring the antenatal mothers or the newborn babies, where they are communicating with them for the purpose of maybe health checkup, immunization, or treatment of the patients. Referring, monitoring, etc. is carried on with this app. Next. ASHA mobile application. All the ASHA workers nowadays are having smartphones where they are able to counsel, guide, educate pregnant, postpartum mothers and the family. Mitten application is again an Android tab web application used to remind ANMs in their work and budget monitoring to improve the work efficiency and effectiveness. These are all for basically for nurses and ANMs. Next. Specialty system. It provides information regarding the physiological monitoring activity, capable of continuously collecting patients data, setting of alarms and generating decision with the electronic. Generally, the telemedicine which we generally talk about is based on this system. And order entry clinical oriented system, that is the clinical record system, that the clinicians can simply select the patient's name and see what is required. The order is immediately transferred to the concerned department. Next. Future is all what they are planning is your voice detection. We have the voice app in the phone, altered option, then clinical image capturing, securing testing, predicting and analysis, shifting to cloud where you can retrieve maybe 10 years, 20 years, 30 years data, then moving the data to cloud. This is what is the future plan for informatics. I think this is the app which your hospital is using, and you should learn and try to use this app as much as possible, because there will be only slight variation in different type of ads, but basically it is the data saving and retrieving and also able to see what is needed for you. Next. So you must be aware of the system which is being used. So every individual who is able to access this app will be given a password, so that the data is going to the correct person. That is important. And from your side also, entering of the correct data is very important. And also see that whenever you are using these app in the unit or wherever it is, do not keep it open. We have patients, we have attenders all the time around, so any data may be leaked, or you may just taking a picture on the phone and sharing with may lose the confidentiality of the report. So computer and computer technology is very very good. It is a blessing to all of us, we agree, because all of us, most of us are using smartphones, and we are able to work very comfortably nowadays. But again, the danger is that if you keep a system open and you are intending some drugs and you get a patient call, the call bell rings, you get up and go, any third person who may have a wrong intention may indent many things which is not required, and then the patient will be billed, and since your id is there, it will come on you. So it is very good to work, but at the same time, your password is important. Logging, yes, is important. Logging out is also very important. Do not share password with anyone. Okay, so enable the patient to access the healthcare information. Basically, you should know what is your role and what is the other's role. If it is healthcare, education, or anything which is related to communicate community, you should be in a position to share with them
what is the relevant information that can be useful. Yes. You have any questions? Because what is being used in your hospital, you will be aware. So what is important for all of us is we have to learn, adapt the changes that are coming. And also we should not give an excuse that, I do not know, it is not, I was not aware that, I didn't switch off the system when I went. So all this is important for us to learn when we are using a computer. Any questions, anything you want to ask? Hello? Yes. Can you hear? Hello, ma'am? Hello, ma'am? Yes, tell me. I can hear. Thank you. Not clear though. Any Thank you. questions? Thank you. No doubts, ma'am. Okay, thank you. Let's read the feedback form submitted. The same class for the next session. 224.